Hello students, welcome back to your IT class. Today we will start our third chapter of IT, that is tables and links. Okay. We are discussing about HTML और HTML में आपको पता होगा कि हम बहुत से टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. ठीक है. तो थर्ड जो टॉपिक है, हमने पहले क्या क्या किया, लिस्ट की है, हमने इमेजेस की हैं कि ये कैसे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML में, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को. ओके. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स और लिंक्स, कि हम कैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं हमारे HTML पेज पे. सबसे पहले देखो टेबल होता क्या है. टेबल allow us to represent data including hyperlinks, text, images into a number of rows and columns. An intersection of a row and column is called a cell. टेबल क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन जो सेल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्रिएट अ टेबल, जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने डाटा को, अपने हाइपरलिंक्स को, अपने इमेजेस, टेक्स्ट, उन सबको रिप्रेजेंट कर सकें. ओके. So a table has the following elements that are caption. It provides a description of table created. Rows, these are the horizontal portion in a table, and columns, these are the vertical portion in a table. Caption describes what? Description of a table. Whatever we will enter in our cells, that will be captions. Rows, the horizontal portions, and columns, the vertical portions. Okay. Now see how we can insert or create a table. Tables in HTML are created using table tag. Which tag? Table tag. It marks the beginning of table, that is opening and closing. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे कुछ टैग्स हम कंटेनर टैग्स होते हैं, वो होते हैं हमारे जिसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की ज़रूरत पड़ती है, और जो एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो ये यहाँ पे क्या है, कंटेनर टैग. ओके. ओपनिंग टेबल टैग एंड क्लोजिंग टेबल टैग. The other tags includes the table tag are as follows. जो टेबल टैग के अंदर जो फर्दर हम टैग्स इंक्लूड करते हैं हमारा टेबल बनाने के लिए, वो कौन कौन से टैग है. TH टैग. The table header is used to define a cell as the header of for a row or a column. कोई भी हेडर बनाने के लिए, हेडिंग जब हम देते हैं अपने टेबल में, उसको बनाने के लिए हम क्या, कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TH टैग. नेक्स्ट इज TR. The table row tag is यूज़ टू स्पेसिफाई अ हॉरिजेंटल पार्शन. हॉरिजेंटल पार्शन के लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे. आपने ऊपर देखा होगा जो रोज़ है वो हॉरिजेंटल पार्शन है, तो हम उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR टैग. नेक्स्ट इज TD. द टेबल टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन इंडिविजुअल सेल इन अ रो. TD टैग क्या है हमारा, जो भी हम डाटा एंटर करेंगे उसको स्पेसिफाई करता है, उसको स्पेसिफाई करेगा सेल में, वो कौन सा टैग है हमारा, TD टैग. नेक्स्ट इज caption tag. Caption tag, the table caption defines a title or description for a table. Whatever we will create, that should be in proper way, which defines the definition or title of our table. Okay. Next is, they can contain all sorts of HTML elements like text, images, list, and other tables, etc. There are some properties associated with these tags. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने देखा होगा इमेजेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, सोर्स था, ऑल्ट और URL. ओके. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, IMG टैग. और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ है हमारी, विड्थ. दीज आर आवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल. विड्थ, हाइट, बॉर्डर स्पेसिंग. ओके. फर्स्ट इज विड्थ, विच डिफाइंस द विड्थ ऑफ अ टेबल, जो कि इनकी वैल्यू आती है हमारी पिक्सल और परसेंटेज की फॉर्म में. ओके. जो विड्थ है हमारी या तो 50 पिक्सल होगी या 50% होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइट. हाइट डिफाइंस द हाइट ऑफ टेबल, दैट विल बी इन पिक्सल्स और ऑन परसेंटेज. इट विल बी 100 पिक्सल और मे बी 200 पिक्सल्स. गॉट इट. Border, this defines the border of a table. It will also in pixel or in percentage. It may be 4 pixel solid. Solid is what? It is the type of border, and green is what? It is the color of border. Okay. Border spacing defines the space between the borders and adjacent cells. Next is these properties are of table. Next property is border collapse. Border collapse defines whether or not border of table should collapse. Means it is separated or it's joined. Okay.
Next is caption side. This defines the position of the caption. Means whatever you will enter in your table or in cell, it should be left side or right side. Okay, these are it should be in top or bottom. Okay. Next is empty cell. Defines whether or not the border should be displayed for empty cell. Suppose it is our table, these are border. So if our table is this and these are empty cells, means in this nothing is containing. 1 2 3 4 5 6, this is table, and in these cells no data is contained. So this border will be displayed or not, it depend on empty cells. Okay, clear? Next, it is a program. You can see a program here. Doc type. What is doc type? It is a HTML. Next, HTML had title as usual. Whatever we however we displayed our program, it is a basic structure. Okay. Next is title. Title is what? Table. Style, table, border. You can see here border, it is 5 pixel solid green. Our border in style tag, we already mentioned the border, that is 5 pixel solid color green, and border spacing is 5 pixel. Border collapse is separate, means our border will be separated, not collapse is separated. Now caption is side bottom, it means not upside, it will be in bottom side. Suppose this is our table, so not this side. Okay, it will be on this side. Got it? Next is style close, head tag start, head tag close. Now body tag started, and table, we are creating a table, that's why we are using here table tag. Okay, then caption is given H5, table example H5 here. These are the heading. Okay, this is caption. Now tr tag, we are creating rows of table, that's why we are creating tr tag, and in tr heading we will give, then this is for th. Okay, in tr tag we contain th tag. Tr tag is this, and th tag are these h1 h2 h3, these are this. Okay, understood? This is row and it is column, row and column. Got it? So tr, for rows we are using tr tag, and for column we are using td. Got it? Next, tr first rows created, then another tr tag td for these descriptions, again tr tag and td for this description, and table tag close, body tag close, and html tag close. Okay, so the output of this complete program is this. When you will do practice, or you will see practically, then you can create your own table as per your choice. Okay, it is not necessary and you are taking h1 h2 h3 h4 here, or abcd or another table. Okay, you can do as per your wish. Next is, in this example given above, a border is applied only to the table. Okay, it is also possible to apply border properties to the td, th and tr tags. The table given below describes the border properties of td tag. Now these are the properties of td tag. Which tag? td tag. First property is padding, next text alignment, next vertical alignment. Padding property defines the space between the content and the border of a cell. It may be left, right or center, or it should be in pixel form. Next is text align, specifies the horizontal alignment of the text. Okay, and next is vertical alignment, which specify the vertical alignment of the text, and all this vertical alignment, it will be in pixel form, and text alignment in top, bottom or middle form. Okay, so
here are some more properties that you can use in th tag. Those properties are for td tag and these properties are for th and tr tag. First is background color. Sets the background color of a cell and you should mention color name and it should be in background color green. This is the example of this property. Next is border. Border sets the thickness of the cell border. It should, the value of this property is in pixel form and you can see example border 2 pixel. Okay. Next is color. Defines the color of the text and color name should be or color name orange and this is the example of this property. Got it? You can see example here. See, border 5 pixel green, border spacing as usual as per this table. We can see here caption table example th header 1, header 2, header 3, header 4, tr tag given, then td abcd and tr close. You can see in this HTML head, title table, close and the body is completely given. Okay, so it is the example of here. It is this program mentioned the output here. The output of this program is here. Okay, you can see and you can easily understood. Okay, up to here read this chapter carefully and if you are facing any kind of problem you can ask from me and try to do practical of this portion. Okay, at least create a table, normal table that contain rows and columns, only rows and columns, no need to insert cells. Okay, no need to insert data in the cells. Okay, so read this chapter